Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 80 for the topic sexual reproduction in flowering plants or in angiosperms. Okay. Now after learning that part of the pollination, types of pollination, and then that contrivances or that devices for outbreeding, now we have to learn regarding the agencies of pollination. We have seen that how self-pollination is not liked by the nature and how cross-pollination is favored by nature. But for cross-pollination, pollen grains should get transferred from the flowers of one plant onto the flowers of another plant. And you know that pollen grains are immobile, non-motile. So they cannot go by their own. How they will reach from one plant to other plant? And for that purpose, some mediators are required, and that mediators are known as agents for pollination. Okay, that mediators carrying out transfer of pollen grains, carrying out transfer of pollen grains or pollens from the flower of one plant to the other plant will be known as agents of pollination. ओके एक जगह से एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक जो कैरी करते हैं पोलन्स को, they are called as the mediators, they are called as the agents of pollination. Now agents of pollination are of two types, abiotic and biotic. Abiotic यानी नॉन लिविंग, वो दो है. How many abiotic agents of pollination are there? ऐसा अगर पूछा तो नॉन लिविंग के दो है. कौन से दो है? One is known as wind or air and the another is known as, what is that? Particularly water. Okay. And biotic agents are only one and they are called as the animals. फिर एनिमल्स अलग अलग हो सकते हैं. बायोटिक एजेंट्स मीन्स लिविंग, जो लिविंग है वो तो एनिमल्स ही है. एंड यू नो द रिलेशंस देयर. वैरायटी ऑफ द एनिमल्स कैन कैरी आउट द ट्रांसफर ऑफ पोलन रेस. अगर हमने ठान लिया तो हम भी ट्रांसफर कर सकते हैं, पर वो नेचुरल नहीं, वो आर्टिफिशियल है. वी आर नॉट मीट फॉर दैट. सम एनिमल्स आर देयर विच आर दैट एनिमल्स, यू नो दैट इंसेक्ट्स आर वेरी पॉपुलर. Okay, then another is the birds. Okay, then another is the bats. Batman, isn't it? Other is the, what is that? That snail. So अलग अलग है, तो ये ध्यान में रखो. Only two abiotic agents and one biotic agent. Number of abiotic and biotic agents used for pollination by the flowering plants, तो उसमें आएगा रिस्पेक्टिवली. तो अबायोटिक एंड बायोटिक रिस्पेक्टिवली क्या है? 2 and 1. कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 4 एनिमल्स है तो वो सोचते हैं 4, 2 and 4 होगा. वो भी ऑप्शन रहेगा वहां पे, 2 and 1, 2 and 3, 2 and 4, 2 and 5, isn't it? तो एनिमल्स एक कैटेगरी ले ली है. दैट्स 2 and 1. हमारे सीबीएसई के बुक में जो दिया है 2 abiotic and 1 biotic. Okay, now these agents of pollination and accordingly that process has given some names. वो नेम मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा. They are not given in the that CBSE book, but particularly wind pollination. When pollination, pollen grains are transferred by wind, then that is known as wind pollination और air pollination. तो इसको एक वर्ड दिया है and that word is known as anemophily. What is the name of that? Anemophily. Anemos का मतलब है wind. Anemos का मतलब क्या आता है? wind.
कई बार हम सोचते हैं एनिमोस यानी एनिमल. इन एनिमोफिली द एजेंट यूज इज नंबर ए एनिमल. हमको लगता है एनिमल ही सही है, एनिमोस आ गया है ना, isn't it? और डी दिया होता है विंड. So wind is the correct answer. If you are knowing the term, then you will write the answer correctly in the MCQ. Okay. So animos yani wind. When pollen grains are carried by the wind, it is known as the anemophily. Then water pollination के लिए क्या use किया है word? When pollen grains are transferred by water, then this is known as water pollination. And this water pollination, where pollen grains are carried by water, it is particularly called as hydrophily. हाइड्रो यानी वाटर, हमको मालूम है हाइड्रो का मतलब वाटर है, इट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली. बट ये दो टाइप जो है, दे आर शोन बाय लेस proportion of plants, less proportion of plants there. Okay, and major portion of the plants there is showing the animal pollination. फिर एनिमल पॉलिनेशन में, एनिमल पॉलिनेशन अगर जो है तो उसके लिए जूफिली नाम का वर्ड यूज किया जाता है. जूफिली का मतलब क्या है? जू यानी एनिमल, फिलस यानी लविंग. ओके, जूफिली, झोपड़ी नहीं, जूफिली, isn't it? अब ये इंसेक्ट के सहायता से अगर होता है तो इसे कहते हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन. मोस्ट कॉमन, इन सभी टाइप्स में ये पॉलिनेशन ज्यादा होता है. एंड इट ऑल्सो नोन एज एंटेमोफिली. उसका जो नाम है वो क्या है? एंटेमोफिली. सॉरी, एंटेमोफिली. एंटेमॉन इस वर्ड का मतलब है insect, and that's why it is called as the entomophily या entomophily भी लिखते हैं वहां, isn't it? Then birds, when pollen grains are carried by birds, it is known as the bird pollination. ये डेंस फॉरेस्ट में ज्यादा दिखता है. बर्ड पॉलिनेशन को हम कहते हैं ऑर्निथोफिली. ऑर्निथोफिली. ऑर्निथॉस इस वर्ड का नाम है बर्ड. ऑर्निथॉस यानी बर्ड, isn't it? Ornithophily. When pollen grains are carried by the bird, it is called as ornithophily. Bats अगर है तो bats को लिए कहते हैं bat pollination, और it is also called as Chiropterophily. Chiropterophily. Chiropteron means bat. वर्ड जो है Chiropteron, उसका मतलब है bat, वटवाघुड़, isn't it? So Chiropterophily, that is shown by few plants only, isn't it? And then snail, when pollination is carried by snail, it is called as malacophily. Rarely used word, malacophily. तो ये एमसीक्यू के लिए मैंने टर्म्स आपको दिए. अगर एमसीक्यू आता है तो हमें मालूम होना चाहिए एग्जैक्टली. द पॉलिनेटिंग एजेंट इज डैश डैश फॉर एनिमोफिली. करेक्ट आंसर इज विंड. When pollination is carried out by snail, it is called as ABCD दिया होगा. करेक्ट आंसर क्या है? malacophily. When pollination is carried out by bat, it is called as, करेक्ट आंसर क्या है? Chiropterophily. When pollination is carried out by insect, it is called as entomophily. When pollination is carried out by birds, it is called as ornithophily. In hydrophily, the pollinating agent is, करेक्ट आंसर क्या है? वाटर, isn't it? तो ये मालूम रखना जरूरी है. मेजर पोर्शन इज शोइंग, मेजर proportion of plants. In major plants you will find animal pollination, और उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्लावरिंग प्लांट्स,
दे शो एंटेमोफिली। ओके, तो ये अच्छी तरह से ध्यान में रखो, ये टेबल बहुत ही इसेंशियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके ऊपर क्या होता है, एनिमोफिली इज द टर्म एंड एनिमोफिलस इज द नेम ऑफ प्लांट। एनिमोफिलस प्लांट कहते हैं इसे। ये जो प्लांट है समझो, मेज ज्वार वगैरह जो है, जो ये दिखाते हैं इस टाइप का पॉलिनेशन, देन दे आर कॉल्ड एज एनिमोफिलस प्लांट, यानी विंड लविंग प्लांट। ये प्लांट जो है वो कैसे है, विंड लविंग प्लांट। उनको लगता है विंड आना चाहिए, सो दैट आवर पॉलिनेशन विल बी इजियर। तो वैसे ही हो जाएगा वो। हाइड्रोफिलस प्लांट, एंटेमोफिलस प्लांट, ऑर्निथोफिलस प्लांट, कैरेप्टेरोफिलस प्लांट, मैलाकोफिलस प्लांट, ये प्लांट्स के नाम है। ओके, so I'm sure that you have got this term. Now one by one we shall learn. अब इसमें सबसे अनसक्सेसफुल होने के चांसेस जो है पोलिनेशन के, वो है वाटर और विंड से, क्योंकि वो ऐसे ही विंड से जाएगा वो पोलन ग्रेन्स का झुंड, तो एग्जैक्टली वो that will fall on the stigma of that same type of the flower of other plant. Chances are very, very, very less, isn't it? And that's why abundant number of pollen grains are required to be produced there. तो इनके जो कुछ characters उन्होंने दिखाए हैं, they are called the adaptations. They are really wonderful. We'll see that characters. Okay, adaptations for anemophily, adaptations for. So let us continue this part, that is adaptations shown by the plants for anemophily. Adaptations for anemophily or wind pollination. So remember, when pollen grains are to be carried by the wind from one plant to other plant, so for that purpose, to make that pollination successful, some specific characters are shown by the plants, and that we have to discuss. वेरी इंटरेस्टिंग। तो पहला एक तो ये एनिमोफिली कौन से प्लांट दिखाते हैं, एग्जाम्पल एनिमोफिलस प्लांट और एनिमोफिली शोन बाय ए पर्टिकुलरली ग्रैमिनी फैमिली जो है, यानी पर्टिकुलरली विल से दैट एनिमोफिली विल बी पॉसिबल इन द दैट प्लांट्स लाइक व्हीट, ज्वार, मेज, sugarcane, grasses, like that, isn't it? So these plants are showing particularly the anemophily. ये ध्यान में रखो। अब इस प्लांट्स में देखो, मेज का प्लांट, अगर ज्वार का प्लांट हमारे विजन में लाएंगे तो बिल्कुल आपको ध्यान में आएगा। Here, first of all, pollens are produced in abundance. In abundance का मतलब क्या है, in very large number, considering the wastage in transit. Considering wastage in transit, उनका जब ट्रांजिट होता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उसमें वेस्टेज हो सकता है ना। बाय कंसिडरिंग दैट वेरी लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस, बहुत ही संख्या, भारी मात्रा में। सो सपोज दे आर प्रोड्यूस इन वेरी लार्ज नंबर, एटलीस्ट फ्यू 1%, 0.1%, इफ दे विल गो देयर। जैसे क्या होता है कि देखो, हम एड जब देखते हैं, फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट करना आजकल थोड़ा कम हो गया है, ये व्हाट्सएप पे वगैरह ज़्यादा मैसेज आते हैं, isn't it? सोशल मीडिया पे ऐड करने के लिए, बट पहले फ्लायर्स बांटते थे, पम्पलेट्स जिसको कहते हैं। सपोज हमारे क्लास का फ्लायर हमें देना है, देन इफ यू विल डिस्ट्रीब्यूट इन दैट पर्टिकुलर जनरल, देयर आर वेरी फ्यू चांसेस दैट दे विल रीच टू द टारगेट। हमारा टारगेट है 11th एंड 12th साइंस स्टूडेंट्स,
और वो समझो साइंस नहीं दूसरे स्टूडेंट्स को मिल गया, आर्ट्स कॉमर्स, फेंक देगा वो, या वो मिल गया एकदम छोटे बच्चे को, या वो मिल गया सपोज एल्डर पर्सन्स को, जिनके कोई अभी जिनको बेटे पढ़ के बड़े हुए हैं, isn't it? Then we will see that they will throw it away. So if that will reach to that proper student of that 11th or 12th, and again if he is in need, he may call to us. तो chances बहुत ही कम है, and for that purpose we have to distribute that pamphlets or flyers in very large number. मेरा सौभाग्य है दोस्तों, आज तक ऐसी नौबत तो मुझे नहीं आई, because of mouth publicity only I was getting the students in huge number every time, और फैमिली रिलेशन भी बन गया था। यानी जैसे अभी आज आप पढ़ रहे हो, मुझे मेरे स्टूडेंट आप हो, आपको अगर मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लग रही है, डेफिनेटली इन यूर फैमिली मेंबर दैट यू आर प्रमोटिंग दैट, उसे कहते हैं माउथ पब्लिसिटी। या यूर फ्रेंड्स नेबर्स है, उनको वो कहते हैं नहीं इनके काटे सर के पास जाओ, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो इस वजह से बाय माउथ पब्लिसिटी आई वॉज गेटिंग द स्टूडेंट्स। तो न्यूज़पेपर में कभी न्यूज़पेपर वाले आते थे हमारे पास, अरे भाई हमको कुछ ऐड दे दो, तो इसलिए उनको देते थे। टेम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने की कभी नौबत नहीं आई। ओके, तो ये जो है, ये अगर पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करने तो लार्ज नंबर में, कंसिडरिंग द वेस्टेज, यही पॉइंट यहाँ पर है, isn't it? Then second thing is that pollen grains are light so that they can be carried by the wind very easily. अगर वो हेवी है तो कैसे कैरी हो जाएंगे? आपने कभी वो चुरमुरे रहते हैं, मुरमुरा मरमरा कहते हैं इसे, isn't it? तो उसका जो चिवड़ा बनाते हैं, वो अभी अगर समझो कार की हमारी विंडो खुली है और वहां पे आप खा रहे हो उसको, इज इट पॉसिबल? नो, नॉट एट ऑल। वो फ्लाई हो जाते हैं मुरमुरे, isn't it? Because of the light nature. So for light nature they can get very easily carried and non-sticky. Non-sticky भी होते थे ये pollen grains, non-sticky भी होते हैं। Then stamens raised to high level in plant, okay, to release the sperms, rather than sperms, it is pollens, to release the pollens easily, isn't it? जनरली देखो आप इस प्लांट में क्या होता है, ये टॉप में वो मेल इन्फ्लोरेसेंस रहता है, and this male inflorescence has got so many male flowers with that stamens there, ये ऐसा। तो इसमें टैसर भी कहते हैं। तो इसमें ये क्या होता है, ये स्टेमन्स जो है हाई लेवल पे, एंड दे कैन रिलीज, थोड़ी भी विंड आ गया तो दे कैन रिलीज द पोलन ग्रेन्स वेरी इजीली एंड दे विल बी कैरीड वेरी इजीली। एक तो लाइट है, isn't it? So pollen grains and that male inflorescence raised to very high level. ये point important है। Then another very important thing is that female inflorescence or female flowers at lower level have long styles and feathery stigma to trap the pollens, यानी कैसा होता है, अभी यहाँ पे दूसरा प्लांट है समझो, वैसा ही है वो, क्रॉस पॉलिनेशन करना है, ये मेल फ्लावर्स उसके ऊपर है, छोड़ दो। अब ये फीमेल फ्लावर्स का ये इन्फ्लोरेसेंस नीचे रहता है, एंड इट हैज गॉट लार्ज नंबर ऑफ सच लॉन्ग स्टाइल्स कमिंग, अंदर भी होते हैं उसके, isn't it? And they contain that feathery stigma, ये ऐसा feathery stigma उसको होता है। So because of that the pollen grains get
tapped here. वो ट्रैप होने के बाद पॉलिनेशन वुड बी पॉसिबल वेरी इजीली. तो बेस्ट एग्जांपल तो उसका हमको मालूम है, कॉर्न कप, कणीस मक्याचं, isn't it? And the tassels coming out of that, tassels are that long styles. वो ऐसे रेशम के जैसे जो आते हैं ना बाहर, कॉर्न कप अगर लिया हमने, यानी मक्याचं कणीस, तो उसमें से वो जो आते हैं रेशम के जैसे धागे, वो एक्चुअली स्टाइल्स होते हैं. And they contain the feathery stigma, so that can catch the pollen grains very easily, carried by the wind current, and the pollination will be successful. Okay. And then another, generally, mostly, ovary has single ovule. Single ovule होता है. And female inflorescence has large number of the flowers. Has large number of female flowers. The best example is that corn cob, large number of female flowers. तो देखो नेचर है ये, कितना प्रयास कर रहे हैं ये प्लांट्स. देखो उनका टारगेट एक ही है, that cross pollination should be there, and again that pollination should be successful when pollen grains are carried by the wind. Pollen grains light होते हैं, dry होते हैं, non sticky होते हैं, abundant amount में किए जाते हैं considering the wastage in transit. Then pollen grains are light and non sticky, stamens are raised to the high level so that easily pollen grains can be released. Female flowers have long styles and feathery stigma. So ये पॉइंट्स आते हैं एमसीक्यू में. Feathery stigma is a characteristic of wind pollinated plants will be correct answer. या anemophilous plant will be correct answer. या anemophily. Okay, ये मालूम होना चाहिए. So I'm sure that you have understood the part very properly. So do read the part, do write the part properly, and see that video again and again to get the concept clear. Give the likes and share to this video. We'll definitely meet in the next video to learn the further part. Do subscribe to my XIIth Biology and XIIth Chemistry channel also. In both these channels, every day you will be getting one MCQ that will help you for NEET examination and for chemistry, even for JEE examination. Okay? Thanks a lot.